Next students, there are some properties of matrix addition. There are total 4 properties: commutative law, associative law, existence of additive identity, and existence of additive inverse. The first one and second one, commutative law and associative law. तो ये प्रॉपर्टी प्रीवियस क्लासेस में कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है? So what is commutative law? A plus B is equal to B plus E. It means कि अगर कोई दो मैट्रिक्स है, if there are two matrices, so sum of A plus B is equal to B plus A. ठीक है? अगर तुम यहाँ का ऑर्डर चेंज करोगे, but उनका जो है sum it should be same, वो same ही आएगा. Either you should do A plus B or B plus A. So this is your commutative law. In associative law, there are three matrices. The condition is A plus B plus C is equal to A plus B plus C. इतना क्लियर हो गया होगा? अगर total three matrices ने A, B and C, if you first add matrices B and C, after that you added that with which matrix? A. It is equal to A plus B plus C. ठीक है? अगर तुसी पहला B ਤੇ C मैट्रिक्स ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ A ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ ਸਮ अगर तुसी पहला A plus B ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ C ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ that should be same. Next is third, existence of additive identity. Identity is the word to be whatever I. It means if you add matrix A with I, it should be same as I plus A is equal to A. क्लियर? अगर तुसी किसी भी मैट्रिक्स को I मतलब कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर तुसी उस मैट्रिक्स के नाल प्लस करोगे, ऐड करोगे, तो रिजल्ट शुड बी सेम एज मैट्रिक्स A. वो रिजल्ट A मैट्रिक्स के इक्वल ही आएगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. The word again inverse. Inverse means अगर कोई मैट्रिक्स A है, तुसी ਇਹਦਾ करोगे नेगेटिव, तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ कितने को होगा O कितने को होगा O. What is O? O is our zero matrix. Clear? ठीक है? अगर किसी मैट्रिक्स का और उधे इनवर्स कह लो या नेगेटिव कह लो, उस मैट्रिक्स का नेगेटिव करके उधे नाल सम करोगे तो रिजल्ट का कितने को होगा वो मैट्रिक्स से इक्वल होगा. So these are the 4 properties of matrix addition. Good morning students. Today we will do example number 9 of your chapter matrices. So question is find x and y. What is x and y? X and y are matrices. ठीक है? If x plus y is equal to 5 2 0 9 and x minus y is equal to 3 6 0 and minus 1. So there are two conditions given. So first condition is sum of two matrices x and y. मतलब कि दो मैट्रिक्स का जो सम गिवन हो दैट इज 5 2 0 9 एंड द सबट्रैक्शन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस x and y इज 3 6 0 एंड -1. दोनों मैट्रिक्स का दोनों गिवन है सम एंड दोनों का गिवन है डिफरेंस. यू हैव टू फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ x and y मैट्रिक्स सेपरेटली. तो सी इन दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स सेपरेटली फाइंड करोगे. क्लियर? सो देयर आर टू कंडीशंस. फर्स्ट इज x plus y and second is x minus y. So you have to apply here elimination method. Clear students? So first term is x plus y is equal to 5 to 0 9 and the second condition is x minus y is equal to 3 6 0 and minus 1. So write like this. Okay. Now you have to apply here elimination method. Now plus y minus y. This cancel. X plus x, it is 2x. You don't need to change the sign, clear? Because the sign of y variable is opposite also. ठीक है? कि जो y variable के signs ने opposite है already. Now you have to add these two matrices. तो दोनों matrix के elements को add करेंगे. Plus करेंगे. Clear? So 5 plus 3 8, 2 plus 6 8, 0 plus 0 0, 9 minus 1 again 8. So what is the value of 2x? 2x is 8808. 2x is 8808. Now we have to find from this equation the value of x. इसी इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड करोगे. So 2 देखो x वेरिएबल जनरेट किया है, it should be multiplied. So take it on the right side, it should become divide. वो तो जाके डिवाइड हो जाएगा. ठीक है? तो जो 2 से डिवाइड करोगे
ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ। It should be divided by every element of this matrices. Now 8 divided by 2, which is 4. 8 divided by 2, again 4. 0 by 2, 0. 8 divided by 2, 4. So this is the value of X matrix. Okay, students. Now similarly we have to find which matrix? Y matrix. Now the second step. You have to change the sign of x variable. See x variable का sign change करोगे. So check करो कि positive sign. So sign change होगी क्या होगा ये negative. Minus का क्या होगा ये plus. इतने plus का sign इतने क्या होगा minus. Clear students? First condition में किसी y variables को eliminate कैसे करोगे? और second condition में किसी x variable को eliminate करोगे. Clear? So x minus x. कैसे? Plus y. It is 2y. Now you have to subtract this matrix from this matrix because your sign is negative sign. Now 5 minus 3, 2, 2 minus 6, minus 2, 0 minus 0, 0, 9 minus minus plus, so 9 plus 1 it is 10. So value of 2y is 2 minus 4, 0, 10. Now we will find the value of y. So 2 becomes y. So 2 by 2 is 1. Minus 4 by 2 is minus 2. 0 by 2 is 0. 10 by 2 is 5. So this is the value of matrix y. Clear? So value of x matrix is 4, 4, 0, 4. And elements of y matrix is 1, minus 2, 0 and. Next example number 10. Find the value of variable x and y from the following equation. So there is the equation given. So 2 is our scalar. This scalar is multiplied by this matrix. Elements of x, 5, 7 and y minus 3 plus 3 minus 4, 1, 2 is equal to matrix 7, 6, 15 and 14. So you have to compare these two matrices. So first multiply this matrix by scalar 2. So 2 multiply x, 2x, 2 5s are 10, 2 7s are 14. And 2 into y, 2y minus 2 3s are 6 plus matrix 3 minus 4, 1 and 2 is equal to matrix 7, 6, 15 and 40. Okay students, now you have to add these two matrices. तो यहाँ दोनों matrix के elements को add करेंगे. So 2x plus 3 as it is 10 plus minus plus minus minus. So 10 minus 4, which is 6. 14 plus 1, that is 15. 2y minus 6. Minus 6 plus 2. Minus 6 plus 2, it is minus 4. Now you have to compare these two matrices because your sign is equal. Equal means कि ना जो elements के corresponding elements वो equal नहीं. ठीक है? तो जैसे में 15 आ रहे हैं, इतने भी आ रहे हैं 15. Equal elements. ठीक है? Now we have to find the value of x and variable y. So you have to compare only value of x and y. So here element is 2x plus 3. 2x plus 3 compared with which element? 7. So 2x is equal to plus is nothing minus. So 7 minus 3 is 4. Now x is equal to 4 by 2. So value of x is 2. Now we have compared the value of y. So it is 2y minus 4 compared with element 14. So it is 2y minus 4 is become positive. So 14 plus 4, 18. Y is equal to 18 by 2, 9. Therefore value of y is 9. Value of x is 2 and value of y is 9. So this will example. Your next topic is multiplication of matrices. Definition: the product of two matrices A and B is defined कि अगर दो मैट्रिक्स ने A ਤੇ B ਉਹਨਾਂ ਦਾ प्रोडक्ट क्या कह लो या मल्टीप्लाई कह लो मल्टीप्लिकेशन कह लो कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ प्रोडक्ट कदों डिफाइन होगा if the number of columns of A is equal to the number of rows of B. मतलब क्या था कि A मैट्रिक्स के जितने कॉलम्स होंगे वो कितने इक्वल होने चाहिए ने इट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन B मैट्रिक्स.
For example, there are two matrices A and B. In A matrix, what is the order? Order is 2 by 3 because there are 2 rows and 3 columns. 2 rows ने and 3 की नहीं columns ने, तो order कितना हो गया 2 by 3. And matrix B having order 3 by 2 because there are 3 rows and 2 columns. क्योंकि इस matrix में 3 rows ने और 2 की ने 2 columns ने. ठीक है. फिर जो है प्रोडक्ट होगा, तो प्रोडक्ट में से A मल्टीप्लाई B इस वाले लिखोगे, यू हैव टू राइट AB. क्लियर कि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट से सिर्फ AB लिखोगे, नॉट राइट लाइक दिस A क्रॉस B. सो व्हाट इज द प्रोडक्ट? AB इज ऑफ ऑर्डर 2 by 2. फिर जो है प्रोडक्ट का ऑर्डर है वो 2 by 2 होगा. किस तरह लिखूं? Order of A matrix is 2 by 3 and order of B matrix is 3 by 2. 3 by 2. So what is the statement? Number of column of A. Number of column of A. This is row and this is column. कि मतलब A matrix में जितने columns थे वो कितने column थे is equal to the number of rows of B. वो B matrix में which rows थे equal होंगे. तो check करो 3 3 same. ठीक है. नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इधर कोई फर्क नहीं है, ये चाहे जो मर्जी हो. क्लियर. नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी. ये इक्वल होना चाहिए. फिर जो प्रोडक्ट था मैट्रिक्स का तो कितने को होगा? वो होगा कितने जिन्हें फर्स्ट मैट्रिक्स के बीच रो ने, जिन्हें फर्स्ट मैट्रिक्स के बीच रो ने और जिन्हें सेकंड मैट्रिक्स के बीच कॉलम ने, उधर प्रोडक्ट कितने होगा. इस करके 2 by 2 ऑर्डर होगा किस मैट्रिक्स का? मैट्रिक्स A. सो 2 by 2 ऑर्डर इज द मैट्रिक्स प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स A. क्लियर स्टूडेंट्स? Yes student, now next see example number 12. Find AB. What is AB? AB is the product of matrix A and B. If matrix A is 6 9 2 3, A matrix के elements ने 6 9 2 and 3 and elements of B matrix is 2 6 0 7 9 8. So we have to find what? We have to find AB. So first you should check AB is defined or not. AB is defined when number of columns in A matrix is equal to the number of rows in B matrix. So first you check the order of A and B matrix. Order is 2 by 2 because there are 2 rows and 2 columns. And order of B matrix is 2 rows and how many columns? 3 columns. Clear students? So check करो कि first matrix के column second matrix के row दे equal होने चाहिए. So there are how many columns in first matrix? 2 columns. And how many rows in second matrix? 2. So check करो 2 and 2 same. Yes. So AB is defined. AB की होगा defined होगा. So what is the order of AB? फिर जो AB मैट्रिक्स का ऑर्डर हो कितना होगा? किसी का कि जिनमें फर्स्ट मैट्रिक्स के बीच रो होंगे और जिनमें सेकंड मैट्रिक्स के बीच कॉलम होंगे वो दे प्रोडक्ट निकला. So rows in first column is 2 and column in second matrix is 3. So order of AB is 2 by 3. 2 by 3. Clear students? Now we find matrix AB. Clear? So A matrix is 6, 9, 2 and 3 and B matrix is 2, 6, 0, 7, 9 and 8. Clear? Okay, so what is the first step? So there are 2 rows and 3 columns in product of AB. 2 rows and 3 columns. Clear students? So check out 2 rows ने and 3 की columns ने. So this is the product of matrix A. Clear? So what is the first entry? First entry is the, you have to multiply first entry of first row and first column. तो इसमें पहला first row नो first column ने क्या करोगे? Multiply करोगे. Clear students? तो चेक करो कि फर्स्ट एलिमेंट कितना आ रहा है 6 और इसके फर्स्ट एलिमेंट कितना आ रहा है 2. सो यू मल्टीप्लाई 6 by 2. ਤੁਸੀਂ ਇਸ रो ਦੇ ਫਰਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲਮ ਦੇ ਫਰਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ
मल्टीप्लाई करोगे. Clear? You should multiply the first element of first row and first element of first column. So 6 multiply 2. Clear? Now the sign is plus sign. If you have the sign plus sign. Clear? Now you have to multiply second element of first row with second element of first column. Want to see इस रो the second element को इस column the second element ना multiply करोगे. So here element is 9 multiplied by 7. So this is our first element of the product AB matrix. ठीक है students? Next step is you again multiply this first row with second column. Want to see इस first row को second column ना multiply करोगे. उधर element समझोगे. Clear? So multiply 6 with 6. 6 multiply 6 plus next 9 multiply with 9. 9 multiply with 9. So this is the second element. Clear? Next again you multiply this first row with third column of second matrix. You multiply this first row with the third column of a second matrix. Again 6 multiply 0. 6 multiply 0 plus 9 multiplied by 8. 9 multiplied by 8. So this is our third element. Clear? Next, so check करो कि जरा first row सीगा वो कितना column से ना multiply हो गया. ठीक है? Now you have to multiply this second row with first column here. Multiply this second row with second column here, and multiply this second row with third column here. Clear students? Step बहुत easy है. पहले first column नो first row ना first row नो first column ना first row नो second column ना first row नो third column ना. Second step में second row with first column, second row with second column, second row with third column. So now we have to multiply second row with first column. Now 2 multiply 2 plus 3 multiply by 7. Next 2 multiply by 6 plus 3 multiply by 9. Next 2 multiply by 0. Next 3 multiply by 8. Students, center is sign हमेशा positive ही होगा. There is always positive sign. Clear? Now we have to solve the brackets. Now 6 2s are it is 12. 9 7s are 63. Now 12 plus 63. How much? It is 75. 75. Clear? Next 6 6 are 36. 9 9 are 81. 36 plus 81. 6 plus 1 7. 3 plus 8. So second element is 117. Next 6 zeros are 0. 9 8s are 72. So third element is 72. Next 2 2s are 4. 3 7s are 21. 21 plus 4 25. Next 2 6s are 12. 3 9s are 27. 27 plus 12. How much? It is 39. Next 2 zeros are 0. 3 8s are 22. So this is our final answer. So this is the product of matrix AB. So check the order in our 2 rows and 3 columns. So it is 2 by 3. So check the order 2 by 3. Clear? So this is your example number 12.